नमस्ते गैजेट टाइम्स फैमिली, दिस इज क्रांति संभव। आज साल के ऑलमोस्ट आखिरी दिन हम लोग बैठे हैं। पूरी गैजेट टाइम्स की टीम सोच रही थी कि ये साल हमारा कैसा गुजरा और किस तरह के प्रोडक्ट्स हमने रिव्यू किए, टेस्ट किए, देखे उनके लॉन्चेस। कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें बड़े अच्छे लगे, कुछ प्रोडक्ट्स जिसमें बेहतरी गुंजाइश थी और कुछ ऐसे ट्रेंड्स जिसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। सो एज यू नो, गैजेट टाइम्स एक ऐसा ब्रांड है जिसमें हम न सिर्फ टेक के बारे में बात करते हैं, उनके जो सभी नए प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं, बल्कि उन्हें रिव्यू भी करते हैं। उनसे लेटेस्ट जो जुड़े हुए, चाहे वो डिस्काउंट की खबरें हों या लॉन्च की खबरें हों, प्राइसिंग की खबरें, सब हम आपके लिए लेकर आते हैं। और उसके पीछे एक बहुत ही खास, एक बड़ी सी टीम है, जिसमें से सबसे पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहूंगा उस टीम से कि आज के हमारे गैजेट टाइम्स के टॉप 5 2022 में कौन कौन हमारे साथ शामिल है। तो यहाँ पर जो हाथ हिला रहे हैं, पावनी 2 हाथ हिला रहे हैं, लेकिन वो एक ही मेंबर यहाँ पर, वेरी बैड जोक बट बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है। सिद्धार्थ शंकर सबसे ऊपर जो विंडो में आपको शायद अपने एक्सट्रीम राइट में दिख रहे होंगे। उसके बाद पावनी है, उसके बाद मोइनाक है, बहुत नर्वस फिलहाल नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ चौहान काफी बोर्ड नजर आ रहे हैं और वरुण के सर से हेलो ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ बिल्कुल, कोई सेम टाइप के आदमी बैठे हुए हैं। बट आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा बेसिकली ये है कि हम स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप, कैमरास, टैबलेट्स और जो हमारे वायरलेस ये सेट्स होते हैं, वो स्मार्टफोन्स, CWS और स्मार्टफोन्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स थे उनके बारे में बात करेंगे। हम सभी के पास एक एक लिस्ट है तैयार जिसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। लेकिन साथ में जो बाकी टीम है उनसे पूछेंगे कि ये इस लिस्ट से अग्री करते हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट गैजेट टाइम्स टॉप 5 2022। तो पहली कैटेगरी किसके पास जाए? आई थिंक वरुण के पास स्मार्ट वॉचेस। वरुण, इस साल इंडिया एक सबसे बड़े मार्केट के तौर पर दिखा स्मार्ट वॉचेस में। कौन क्या है लिस्ट और जो टॉप के जो ऐसे स्मार्ट वॉचेस हैं जिन्हें गैजेट टाइम से हमने रिव्यू किया या जिनके बारे में हमने खबरें डाली, कौन कौन सी थी? एंड देन आई विल आस्क द टीम मेंबर्स कि उनको क्या लगा इनके बारे में। आई थिंक इस साल बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस आए थे, बट मेरे को क्या लगता है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने प्राइस रेंज में एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो उस प्राइस रेंज को कैप्चर करना चाहता है। सो फॉर मी, आई थिंक इफ आई हैड टू कंपाइल अ लिस्ट, आई वुड से द एप्पल वॉच अल्ट्रा, द एप्पल वॉच सीरीज 8, Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 5, and OnePlus Nord Buds भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। And lastly, the fifth watch, which I would like to say, is Amazfit GTS Mini 2, जो एक ऐसे प्राइस रेंज में आता है, which is pretty good and it captures that segment very well. So, what about other guys? आपको क्या लग रहा है लिस्ट के बारे में? And do we need to mention some other products as well? Well, I think Varun was right in saying that Apple Watch Ultra and the Galaxy Watch 5 Pro, dono they have been very good innovations for this year. Apple Watch Ultra and as well as the Watch 5 Pro, dono first time titanium body shell के साथ आते हैं. They have got a whole ton list of features. So I think that's a very good contender for 2022. और ये मार्केट जो बढ़ा है, सिद्धार्थ चौहान या सिद्धार्थ शंकर, वो वांट्स टू आंसर। इस बार मार्केट हमने बहुत सारा न्यूज़ सुना कि इंडिया में, रीजन क्या हमें नजर आया, क्यों हम लोग इतने सारे स्मार्ट वॉचेस खरीद रहे हैं? तो एक जो खबर आई थी कुछ ही महीने भर पहले कि इंडिया हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच मार्केट इन द वर्ल्ड। तो कई सारे स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो खरीदे भी जा रहे हैं। एंड इफ यू लुक एट द बजट सेगमेंट, तो लोअर एंड जो बजट सेगमेंट है, फायर बोल्ट की वॉचेस हो गई, बोट की स्मार्ट वॉचेस, नॉइज की जो अफोर्डेबल कैटेगरी में जो स्मार्ट वॉचेस हैं, दोज आर सेलिंग रियली वेल इन इंडिया राइट नाउ एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट वॉच व्हिच इज स्मार्ट।
राइट, सो आई गेस वॉल्यूम की वजह से जो लो एंड में मार्केट में बहुत सारे जो वॉचेस हमें देखने को मिले, इस चक्कर में जो मार्केट ओवरऑल एक्सपैंड हुआ है, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर स्मार्ट वॉचेस. अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से लैपटॉप की बात करते हैं. आई नो आप गैजेट टाइम्स के लाइव में जुड़े हैं, या आपने देखा है वीडियो, और उसमें आपको लग रहा हो कि स्मार्टफोन सबसे पहले होना चाहिए, तो स्मार्टफोन्स के ऊपर आएंगे. लेकिन इससे पहले इस साल हमने देखा कि सभी जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं उन्होंने मार्केट में बहुत ही अलग अलग तरीके से आई गेस धूम मचाई है. सो लेट्स टॉक अबाउट लैपटॉप्स राइट नाउ. तो लैपटॉप्स किसके हिस्से के हैं? So I used a couple of laptops this year, but so some of the laptops जो अभी हमने हाल ही में recently मोइनाक मैंने सिड ने टेस्ट किया है, that one of them like we were blown away by it, and that was the MSI GP76. So that is like one of the MSI का one of the Halo flagship product. series. Yeah. या राइट. तो इसमें आपको मिल जाता है हाई टीजीपी वाले जीपीयूज मिल जाते हैं, RTX 3060 या RTX 3080 इवन, which supports up to 165 watt of graphic power. इसके साथ साथ हमें इसमें बहुत बढ़िया कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है कि फैंस जो है वो थोड़े से लाउड हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. Then we get to the build quality actually. So the build quality of this laptop, the MSI GP70, really really good, and काफी हैवी कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मोइनाक और मैं डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, दैट मोइनाक को थोड़ा सा ये हैवी लग रहा था, एंड ये हैवी है भी एक लैपटॉप MSI GP76, बट एट द सेम टाइम द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी नाइस. एंड इसके अलावा अगर हम बाकी लैपटॉप्स की बात करें तो मैकबुक एयर था M2 चिप के साथ. असूस ने ROG Strix 17 लॉन्च किया था. इसके साथ ही जो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट इस साल देखने को मिला, दैट वाज द Asus ZenBook Pro 16X OLED, जो कि एक फोल्डेबल नहीं, आई एम सॉरी, ZenBook 17 fold. ZenBook. ZenBook 17 Yes, Old. fold. the हाँ foldable laptop. Yes, yes, हाँ yes, yes, yes. हाँ. Yeah, That was it was quite a crazy interesting. laptop. Crazy laptop. So Hmm. like you take it anywhere, people will be asking you कि भाई कितने का है ये laptop. It's like a huge TV that और folds into a Right. laptop with a wireless yes, keyboard. Like tech into the power infinity हो गया उसका तो. और infinity. कितने का है और वो आपने जवाब hats नहीं off दिया. to Asus, 3-3.5 लाख रुपए का है. वेरी नाइस. एंड हैट्स ऑफ टू Asus कि उन्होंने इस साल काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले, जैसे क्रिएटर सीरीज जो अभी सिद्धार्थ कह रहा था. Correct. तो Yes. नॉट जस्ट फॉर गेमर्स, नहीं तो हाँ, क्रिएटिव पीपल, लाइक इवन लाइक वी आर बेयरली क्रिएटिव, बट हम जैसे लोग जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो फोटो एडिटर्स हैं, वो गेमिंग लैपटॉप्स यूज करते हैं बिकॉज उसमें ज्यादा पावर होती है. लेकिन Asus ने क्रिएटर सीरीज लैपटॉप्स निकाले जिसमें जॉक डायल है, कुछ कुछ है, इनोवेटिव थिंग्स मे और मे नॉट बी but a company thinking differently than just business, personal और एक gaming laptop. So इस interesting पॉइंट पे stuff. मैं भी और कुछ ऐड 2020 इस पॉइंट पे मैं बोलो भी बोलो. कुछ ऐड करना चाहूंगा, दैट लाइक सिड सेड कि इस साल काफी सारे कंपनीज लाइक असूस ने काफी सारी लैपटॉप्स निकाले हैं बेस्ड लाइक फॉर क्रिएटर्स. सो वन मोर थिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड इज दैट जैसे अभी असूस वीवो बुक OLED 15 आया था, which was Right, really a right, right. good series because उसमें OLED screen मिल रही थी आपको. You had like high end specifications and everything under 1 lakh or around 1 lakh. So that they are trying to actually expand their user base by trying to appeal to different spectrum of users, not only just for gamers but also for creators and also for someone who जिसको जाके बस अपने लैपटॉप में कुछ कंटेंट देखना है. So I think that's also a very good initiative. Right. So one of the common like features that I found really say great about Asus laptops this year was the display. So gradually we are now shifting, and these are becoming really common, say in
under 1.5 lakh rupees of laptops. So जैसे कि अभी हमने फोल्डेबल का एग्जांपल दिया, सिमिलरली द ZenBook Pro 16X which Sid was talking about earlier, so it has a really good color calibrated display which is amazing for those who are looking for a video editing machine, right? Good. So next, I guess, Pavni ki baari hai. You have the list of cameras, I guess, huh? Pavni? Yes, I am listening very silently because I'm super to talk about cameras in particular. So, मेरे को अपना before I count on the products that I really liked in 2022, I just want to say that a lot of people still think that smartphone cameras can kill the mirrorless cameras या फिर DSLRs gingerly. But let me tell you, ऐसा नहीं होने वाला है. People still choose, professional cameras if they want to do some professional kind of photography. तो ऐसे बहुत सारे कैमराज हैं जो मैंने भी इस साल इस्तेमाल किए हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं बिकॉज आई हैव मेंशन्ड द वर्ड प्रोफेशनल. तो पहला कैमरा जो मुझे बहुत पसंद आया वो था कैनन का EOS R3. बहुत ही प्रोफेशनल, ठीक है. उसका प्राइसिंग भी उसी तरीके से उन लोगों ने रखा था, समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीस. उसमें मतलब इट वाज डेडिकेटेड फॉर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या कुछ ऐसा इस तरीके के इवेंट्स कवर करने के लिए, इसलिए उन्होंने उसी तरीके के फीचर्स भी डाले थे, 6K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग्स. दूसरा कैमरा जो मुझे लगता है कि ज्यादा जनता खरीद सकती है वो है सोनी अल्फा 4 because that is meant for both photographers as well as videographers. और बाकी सोनी की कैमरास की खासियत तो होती ही है, लाइक दे हैव दिस यूनिवर्सल हॉट शू SNQ मोड जो लोगों को बहुत पसंद आता है. इसी के साथ उसके अपने जो USP है सोनी कैमरास की, वो उसके हैं क्रिएटिव स्टाइल्स एंड लुक्स, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. सो दीज टू आर समवॉट द कूल कैमरास वाली कैटेगरी में भी हमको 2-3 कैमरास देखने को मिले थे, जैसे कि सोनी ZV-E10. सो इट्स अ डेडिकेटेड ब्लॉगर कैमरा. उसी तरीके से कैनन भी लेकर आया था सोनी, कैनन EOS R10. तो ये 2 कूल कैमरास भी हमको देखने को मिले थे जिनको कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड थे. फूजी फिल्म भी इस साल एक कैमरा लेकर आया था विच वाज XT5. ये सक्सेसर था XT4 का, जो कि आई थिंक 2020 में लॉन्च हुआ था. मुझे पर्सनली फूजी बहुत अच्छी जो लगती है वो ये है कि उसमें आपको मिलता है X-Trans CMOS सेंसर. तो वो X-Trans 5 सेंसर, उसकी वजह से जो उसका कलर रिप्रोडक्शन है दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. तो these are the things, these were the reason I wanted to choose these cameras for my list, क्योंकि सब में कोई ना कोई खासियत है, उनकी अपनी एक यूनिक USP है. तो लिस्ट तो काफी आई गेस प्रिसाइज है, बट ये क्वेश्चन जो आपने शुरू में कहा था, आई रियली वांट टू आस्क सिद्धार्थ एंड आई गेस मोइना कि ये जो लाइन बोली थी पावनी ने, आपको यू एग्री विद इट कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा और स्मार्टफोन्स में जो फर्क है अभी मिटने में बहुत टाइम लगेगा? Yes, true. Because I feel of course in terms of picture quality, image quality, video quality, resolution, phone cameras are like काफी बहुत जल्दी like evolve हो रहे हैं and they are like getting better and better day by day. Like we now have like अभी तो like it's not very far away, 200 megapixel cameras are going to come like next year in like probably in the next 3-4 weeks के अंदर. So like it's not a very huge thing that phone cameras are reaching to the point where DSLRs and mirrorless cameras are, but वो जो gap है वो that the last mile is the hardest to cross, and अभी भी वो time काफी है where smartphone cameras will take to reach to that level, the depth, the color reproduction as Pavni said. So that is like the best when you use actual DSLRs meant for that purpose. Because it's not just about the number of megapixels. Sorry, what? I'm saying that's because it's not just about the number of megapixels. आपको कैमरा में इतनी सारी चीजें मिलती हैं. There is lens जिसमें इतनी सारी चीजें होती हैं. Then you get lot of filters also. बहुत सारे features आपको मिलते हैं. कैमरा स्मार्टफोन कैमरास, oops, jumble words. So स्मार्टफोन कैमरास में आपको सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल्स पे ही काम किया जा रहा है.
पर लेकिन कैमरा बॉडी जो है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली केवल मेगापिक्सल से आप बेटर रिजल्ट नहीं पा सकते, उसके लिए और भी बहुत सारे मैकेनिज्म चाहिए, बट अब मेरा एक इसमें पॉइंट है, हाँ प्लीज, आप ही के पास आ रहा है। मेरा ये पॉइंट है कि the best camera is the camera you have with you. So डीएसएलआर वगैरह कैन, मतलब एक स्मार्टफोन और एक डीएसएलआर में बहुत फर्क है, बट एक डीएसएलआर को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं हर टाइम, दैट डजंट हैपन। हम सबके पास डीएसएलआर्स एंड एक्सपेंसिव कैमराज हैं बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड, बट आप उसको कहाँ कहाँ ढोते रहेंगे, उसी टाइम पे मोबाइल फोन आपके पास रहता है, एंड दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर बाइंग इवन, मतलब उनका प्रेफरेंस होता है कि एक अच्छा कैमरा हो फोन में। दैट इज वेयर दिस थिंग कम्स कि क्या ये फोन्स डीएसएलआर को बीट कर पाएगा। I guess, But I then don't know, now maybe you I'm get wrong. very compact cameras also. मतलब I वहीं think पर अगर हम maybe GoPro को देखें तो वो कितना कॉम्पैक्ट है। बट आई maybe I'm ऑल्सो wrong, थिंक but कि जो भी बिकॉज चीज ये मार्केट भी कैमराज इतने अभी मतलब बिकॉज स्मार्टफोन इतने अच्छे हो गए हैं, कैमराज लाइक नॉर्मल अ कैजुअल यूजर विल मतलब he'll be spoiled for choice and maybe मतलब कैमराज आर विल ओनली बी bought by people who are hardcore photographers. ये भी आई थिंक एक चेंज शिफ्ट हुआ है इन द what I was लास्ट 10 saying years. that यहाँ पे इस मार्केट को भी पोलराइज होते हुए हम देख सकते हैं, where most of the users they'll go for smartphones जिसके कैमरा बेहतर हो, और जो बहुत ही प्रोफेशनल है हार्डकोर वही मिररलेस या इस तरह के प्रोफेशनल कैमरास की तरफ जाएंगे आई गेस। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टैबलेट्स। सिद्धार्थ, शंकर हैज द लिस्ट। सिद्धार्थ, कौन कौन से टैबलेट्स? So yes, let me start with tablets. Tablets, Android tablets specifically एक बहुत ही dead space है, but 2022 saw some changes। जैसे मुझे जो इस साल का best tablet लगा, which was a game changer for Androids basically, was the Samsung Tab S8, the whole series, the S8 Ultra। मतलब it actually ये ऐसा प्रोडक्ट था सैमसंग से जो आईपैड प्रो सीरीज को टक्कर दे सकता है, और उसको एक्चुअली उससे काफी थोड़ा आगे भी जा सकता है, स्क्रीन एंड एवरीथिंग। सो दैट ऑन द फ्लैगशिप एंड मुझे S8 सीरीज बहुत अच्छा लगा, उसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर, फ्लैगशिप बिल्ड क्वालिटी एक्सेट्रा, एवरीथिंग गुड। ऑन द बजट एंड मुझे जो सबसे अच्छा लगा, और इसके साथ काफी लोग अग्री भी करेंगे, वो है MI पैड 5। ये एक Xiaomi का ऐसा टैबलेट है जिसको लोग खरीदने के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज इसमें 860 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज स्क्रीन है, और ये आपको 25 से 30 हजार के बीच में मिल जाता है। इट्स सुप्रीम वैल्यू फॉर मनी। नाउ कमिंग टू अदर टैबलेट्स, लेट्स गेट ऑन टू एप्पल का आईपैड इस साल जो था वो काफी ही मतलब अंडरवेलमिंग था। उसमें सिर्फ एक ही चेंज था, वो था M2 प्रोसेसर, और M1 जो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड था, M2 भी ओवर पावर्ड है, बट एक छोटा से प्रोसेसर के लिए पूरा आईपैड का नया जनरेशन, सो दैट वाज अ लिटिल लैकलस्टर। आईपैड आई बिलीव इज अ गुड प्रोडक्ट, बट आईपैड ओएस उसको पीछे खींचता है, उसमें आप इट कैन नॉट बी योर लैपटॉप रिप्लेसमेंट एट ऑल। सो दिस इज व्हाट आई थिंक गाइस, व्हाट आर योर व्यूज? Yeah, when it comes to budget tablets, I really liked Realme Pad. मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसका UI ज्यादा बेहतर है and it's easy to use also. So I really like the quality. आई थिंक एंड जो वो 5G सिड है। ने कहा, एंड आई थिंक मोनाक वुड अग्री विथ मी कि जो सैमसंग टैब S8 सीरीज था उसका जो स्क्रीन था इट वाज वेरी वेरी That गुड, एंड आई थिंक इट वाज माइल्स अहेड ऑफ द आईपैड। बट देन अगर आप आईपैड कंसिडर करते हो देन यू द परफॉर्मेंस इज माइल्स अहेड, सो इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ कि आपको बेटर yeah. स्क्रीन चाहिए या बेटर परफॉर्मेंस। I personally found the Xiaomi Mi Pad 5 to be like one of the best tablets in years, Android tablets. Uh, like a good, really good value for money, and Apple iPad, जो base Apple iPad है 9 gen या 10 gen, it gives like a 9th gen है। solid tucker to the iPad. Like you get a better display, you get better performance, and it's generally very the display is really nice to watch films
and TV shows, Netflix, binge watching, whatever. Cool. And now TWS wireless. Siddharth, you only have the list, I guess. या सो TWS मतलब ये तो ऐसा सेक्शन है, ऐसा सेगमेंट है कि ये हर दिन हमारे पास कोई ना कोई नया चीज आते रहता है. सो इतने सारे True. TWSs के बीच में इतने सारे TWSs के बीच में देयर आर वेरी फ्यू दैट स्टैंड आउट. तो मैं मतलब मुझे जो बेस्ट लगा वो लगा एप्पल एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन. नाउ ये इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये एप्पल का प्रोडक्ट है, ये इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें कुछ चीजें हैं जो स्टैंड आउट करती हैं. एक चीज है इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ANC, वो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है. इट इज इवन बेटर देन इनका जो मैक्स 50,000 रुपए का जो हेडफोन्स आता है उससे भी बेटर है. और दूसरी चीज है, जैसे अभी मैं लगा के बात कर रहा हूँ, मैं लोग आप देखते हैं कि लोग ऑफिस में घूम रहे हैं या वहां घूम रहे हैं, उनके कान में एयरपॉड्स होता है. वो इसीलिए होता है क्योंकि इसका ट्रांसपेरेंसी मोड इज अनबिलीवेबल. इसमें आपकी वॉइस जो है आपको अपने एयरपॉड्स के थ्रू ही एकदम सेम वॉल्यूम सेम क्वालिटी में सुनाई देता है. थर्ड चीज जो मुझे अच्छी लगी इसमें कि एयरपॉड्स अगर छोटी सी चीजें गुम हो जाती हैं तो आप फाइंड माई आईफोन के थ्रू इसको ट्रैक कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंड जो मुझे अच्छा लगा, सैमसंग बड्स 2 प्रो. नाउ दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एयरपॉड्स प्रो 2. थोड़ा सस्ता है ये उससे, लेकिन ऑडियो क्वालिटी में सैमसंग एयरपॉड्स 2 को बीट करता है. मतलब इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. एप्पल वाले में इतना ज्यादा आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ऑडियो क्वालिटी में, सैमसंग में आप कर सकते हैं. इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी अच्छा है, प्लस ये कलर्स बहुत सारे कलर्स में आता है. सो इफ यू वांट टू ड्रेस अप और यू लाइक अ पर्टिकुलर कलर लाइक दिस पर्पल, सो यू कैन यूज इट. इसके बाद बजट सेगमेंट में मुझे Oppo Enco X2 बहुत अच्छा लगा. Oppo के Enco सीरीज के जो भी TWS है बहुत ही अच्छे हैं. उसका ANC is very good, sound quality is also good, and if you're using an Oppo or a OnePlus phone, you get much more features inside the phone itself. Worth mentioning Sennheiser के Momentum 3, excellent sound quality. इतना अच्छा पेडिग्री ब्रांड है, इतना अच्छा पुराना ब्रांड है, वो उसका जो लेगेसी है उस TWS में मिलता है आपको. ANC is not all that good, but if you're looking for sound quality, Sennheiser Momentum 3. What do you think, guys? Yeah, I've already Agree. Absolutely said agree with you, Oppo Sid. Enco जो आपने X2 लिस्ट plus बताई, it one. was absolutely And agree with the list. I would like to add one more to the this Realme Buds Q2S. ये बजट सेगमेंट में आया था, कॉस्टेड ओनली $2,000 एंड उसका साउंड वाज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैड हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम. उसके साथ एक और था प्लेगो इज दिस इंडियन कंपनी एंड दे हैड दिस product called the duopods. So duopods में it had dual drivers and the sound quality for what it was costed like 1700 1800 रुपए 1800 rupees के TWS buds and they sounded like at least like कम से कम 4-5 हजार के TWS खरीदे किसी ने, including the build quality as well. So Varun, we haven't included big headphones, but इस साल any development अगर हम headphones की बात करें, do you have something? Because you are a music यस, तो अगर हम guy. हेडफोन्स की बात करें तो आई फील दैट दो हेडफोन्स मेरे माइंड में लाइक दे आर स्टक इन माय माइंड. एक है XM5 सोनी का, which is the best sounding ANC headphones that I've tested in a long time. आप वो लगाओगे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा. It's really really good. और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो the Sennheiser Momentum 4 headphones are really really good. मतलब वो एक ऐसा पेयर ऑफ हेडफोन्स है जो ऑडियो फाइल्स को भी अपील करेगा और कैजुअल लिसनर्स को भी, बिकॉज उसके अंदर इक्वलाइजर बहुत अच्छे से काम करता है. बोट अ प्राइस अराउंड 20-25,000 विद Now ऑफर्स, let's नहीं तो move to 30,000 के smartphones here. आसपास. हमारा टाइम मेरे ख्याल से खत्म होने वाला है. Let's move to smartphones. I guess बहुत सारे इस साल anyway लॉन्च हुए हैं, but मोइना के लिस्ट में क्या है मोइना? smartphones के लिस्ट में like we start off with the S22 Ultra. Samsung launched it at the starting of this year and to be honest like पूरे साल में I think that is the only phone that has been consistently good like over the past 12 months and
Speaking of hardware, it had it came with four cameras, and it had like X-Watt megapixel space zoom, 100x plus zoom is fine. So it was one crazy phone. You could shoot pictures of the moon, and वो एकदम clear आएंगे, not the AI stuff that Huawei was accused of. And it had first of all, it also came with a Snapdragon chipset. So Samsung and Snapdragon का combination has always been a very good flagship value when it been like दूसरे phones के साथ अगर compare करें तो. Also, there's one more phone that like a smartphone that I really liked this year, value for money flagship phone, was the Realme GT2 Pro. So it came with a Snapdragon 8 Gen 1 chip and a 2K display. Like it had one of the best displays in the market as of yet, and like the performance was really good. I reviewed it, and like I still use it. It has this very fun thing, microscope mode करके, and you can shoot really close up photos of anything that you want. So फोन्स के लिए तो आप लोगों के पास भी और भी थॉट्स होंगे, यू वांट टू शेयर फटाफट बिकॉज़ अब टाइम थोड़ा हमारे पास कम रह गया है. yeah, like I think we all as smartphone as a segment in India has grown like by leaps and bounds, and like foldable ke market mein also Samsung is ahead with the Fold 4 and the Flip 4, and also then we have the ROG 6 Pro as well. It was one crazy phone that Asus had launched, and sad to say that अभी तक वो सेल पे मिलना बहुत मुश्किल है वो phone, but that is one crazy phone that Asus had come in India with. Any other smartphone you guys want to mention जो हमारे व्यूअर्स No, को? but I I really think want to Xiaomi mention 12 the Pro cover एक ऐसा screen फोन of था. the Flip 4. Yeah, One by Siddharth, one, guys. Varun, go ahead. Okay, I think Xiaomi 12 Pro एक ऐसा फोन था जिसका कैमरा was very good at the price it came in. So under 55,000 में it had a amazing camera, especially जो main sensor था. I was really blown away by that. So I think that is a phone which has gone under the radar for a lot of people. For me, it will be the Vivo X80 Pro. With the camera setup on the X80 Pro is next level. Pavani, you had some name. Yes. So I just want to say that this year I was only crushing over the compact phones. तो मेरे one from my Inox list was Flip phone. मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, especially its cover screen, which is like super useful and practical. And the other phone that I used and I find कि बहुत teeny tiny अच्छा सा cute सा phone है, easy to use, was S22. So for me, this year was all about compact phones. I was crushing over them like totally. Siddharth, Shankar. I agree with Pavni. I also really like the Flip 4 because वो इतना कॉम्पैक्ट है, उसका स्क्रीन भी अच्छे से चलता है, बाहर वाले स्क्रीन से ही अपना वीडियो वगैरह बना सकते हैं. So selfie generation, TikTokers, everything. Another thing that I am using an iPhone 14 Pro, जो it's an incremental upgrade, but camera and video and ProRes video, something which other phones don't have. To that particular segment is still untouched with iPhone. Cool. So before I wind up, आप लोगों से एक simple question, 2023 में कौन सा ऐसा section है, segment है और tech है which you looking forward to? Start with Siddharth, only Siddharth Shankar. 2023 में बहुत सारी चीजें आ रही हैं. We are not personally buying anything, all of us, and we are also waiting for the new things to come out. CES is just there in Jan. Snapdragon 8 Gen 2 phones हम सबको देखने हैं. Speed उनका कैसा होगा, and Intel 13 Gen laptops और Nvidia 40 series graphics card. So ये तीन हम सबके ही wish list में होंगे. अब बाकी देखते हैं आगे. आगे वरुण. I would like to see कि कंपनीज सॉफ्टवेयर में कैसा काम करते हैं, बिकॉज जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि हार्डवेयर में तो कंपनीज हमेशा ही दे एवरी ईयर दे कम आउट विद इंक्रीमेंटल अपग्रेड, बट आई वांट टू सी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, स्पेशली ऑन द एंड्रॉइड साइड ऑफ थिंग्स. दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू.
I think I'm very interested in smartphones ताकि because smartphones में अभी क्या आने वाला है, like I'm just very excited. Foldables is going to see a huge push, and उसके बाद cameras in smartphones are going to become much better. 200 megapixel cameras अभी are going to become the norm as opposed to 108 megapixels, and also fast charging is one area where I think like smartphones like are making very huge progress. But 2022 has seen 165 watts as fastest, and now we are still waiting. Like Oppo is working on a fast charging tech. So let's see what's in store for 2023. Pavni? ऑनेस्टली केस दो टाइप की लिस्ट होती है। एक तो जो सभी ने मेंशन कर दी है, सिड, वरुण, मोइना, लाइक बोथ द सिड्स की स्मार्टफोन, कैमरास। उसके अलावा व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज न्यू टेक। उसमें आपको छोटे छोटे गैजेट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल डैश कैम आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ड्रोन्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, सो आई जस्ट लाइक टू बी I want to be surprised. So basically, I'm waiting for those unique, innovative tech gadgets. कि क्या मिलेगा 2023 में? Mr. Chauhan? Overall, I would like to. I'm very hopeful about 2023 in terms of like different categories. अभी जैसे हम लोग tablets के बारे में discuss कर रहे थे that Android space has been sort of like drought में with the tablets, but अब Xiaomi ने जैसे इस साल Pad 5 निकाला, so I wish and I hope that they follow it up. Similarly for smartphones, the X90 Pro is just around the corner, so really excited to test that out. चलिए कूल है, आप लोगों ने तो नहीं पूछा लेकिन मैं खुद से ही बता देता हूँ what I'm looking forward to. So that वो वाला एरिया जो है, फिर आप लोग ये नहीं कहोगे ये स्टोरी आप क्यों कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है मुझे लग रहा है कि बड़े स्पीड तो काफी जबरदस्त है, न सिर्फ इंटरेस्टिंग है, कूल है, बल्कि माइंड बॉगलिंग स्पीड भी है। सो आई एम श्योर अगले साल उसके ऊपर तो काफी डिस्कशन होगा। सो एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग, एंड आई होप ये वीडियो बाद में भी हमारे जो दोस्त हैं वो देखेंगे एंड दे कैन मेक अप देयर माइंड कि भाई गैजेट टाइम्स की टीम 2022 में बेसिकली कर क्या रही थी और अगले साल क्या हमारा एजेंडा है। एंड फिलहाल सभी को थैंक्स देखने के लिए और हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year.